Hello student, good morning. Chapter the Union Government, the Executive, Chapter 19. इस वीडियो में एक्सरसाइज ए बी सी डी और ई करेंगे. सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन. Who amongst the following is the head of the Union Government? So the Prime Minister is the head of the Union Government. Question number 2. The Supreme Commander of India Defence Forces is the President of India. Is the Supreme Commander. Now, question number 3. Which one of the following statement is true? The Union Home Minister act as a link between the President and the Cabinet. यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है, यूनियन होम मिनिस्टर. तो ये टर्म क्या है, ये हमारा ये टर्म सही नहीं है. नाउ नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इंटाइटल्ड टू ऑल द पावर and privilege due to the president's even if he is obfuscating. It's not true. All the members of Rajya Sbaha are entitled to vote in the presidential election. बोला कि सभी राज्यसभा के सारे मेंबर्स जो हैं वो इंटाइटल्ड हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट देने के लिए. नहीं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो इंटाइटल्ड नहीं हैं. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडियन पार्लियामेंट्स के एक अभिन्न अंग हैं. तो हमारा ये डी ऑप्शन जो है वो राइट है. हम डी पे टिक करेंगे. नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोक सभा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. Then question number 5. In case of certain extraordinary situation, the president can sanction money to the government out of contingency fund. Now fill in the blanks. जो ब्लू से लिखा हुआ है वो आपका ब्लैंक पार्ट है. ओके. In a parliamentary form of government, the two types of executives are nominal and real. The process to remove the president of India is called impeachment, and the Union Council of Ministers is there to aid and advise the president of India. Responsibilities of all the ministers to be defend their act and decision is called collective responsibility. The President of India is elected by single transferable vote system. Now, true false. The Union Executive comprises of the Prime Minister and the Council of Ministers. False. The President of India cannot be re-elected for a second term. तो बोला कि President जो है वो re-elect नहीं हो सकते हैं. False. All the elected member of Parliament and the State Legislative Assembly elect the President of India. Yes, true. The impositions of emergency in a state is called presidential rule. सही है भाई. The chairman of Rajya Sbaha must be a member of Rajya Sbaha. False. Now, answer the following question. Explain the judicial power of the President of India. President of India की judicial power को explain करना है. Judicial power of the President of India. The President appoint all the judge of the Supreme Court and High Court, including the Chief Justice. On appeal of mercy, the President has the power to reduce the sentence or grant pardon or amnesty. Number 3, she can change the death sentence or can postpone it also. तो ये प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर हो गई. न्यायिक जुडिशियल पावर मीन्स उनकी न्यायिक शक्तियाँ हो गई. क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन प्रोसेस क्या है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोक सभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट. तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन वोट कर रहा है, तो लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो. द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द single transferable vote system of
proportional representation. Under this system, it is essential to secure the fixed quota of vote to get elected. Number 3. Differentiate between the real and the nominal executive of India. The real executive is the Prime Minister and the Council of Ministers. Okay. Whereas the President is the nominal executive. और जो President क्या है वो nominal executive है because he is bonded to act on the advice of the Council of Minister. किसकी एडवाइस पे एक्ट करेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे एक्ट करेंगे. Now, question number 4. How can the President of India be removed and on what ground? Explain. If the President of India violates the Constitution, she can be removed from the office by a resolution of impeachment which is passed by both the House of the Parliament by two-third majority of the total membership. भाई रेजोल्यूशन जो पास होना चाहिए कैसा होना चाहिए तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर, जितने टोटल मेंबर हैं उसके 2/3 मेजोरिटी से अगर इम्पीचमेंट पास होता है तो प्रेसिडेंट के ऊपर अभियोग लगाया जाता है, इम्पीचमेंट लगाया जाता है. डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. भाई पावर क्या पावर फंक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का इंडिया का. द पावर एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. She is the ex officio chairman of Rajya Sbaha. He presides over the meeting of the Rajya Sbaha, conducts its proceedings and maintains the discipline and decorum of the House. Since the Vice President is not a member of Rajya Sbaha, she does not participate in voting in the House. But in case of tie, she can exercise his casting vote. अगर मान लो कोई बिल पास हो रहा है, वो टाई हो रहा है, अगर उस वोटिंग करने के बाद टाई हो जा रहा है तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट है वो भी वोट कर सकते हैं टाई के सिचुएशन में. व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट ड्यू टू द डेथ, रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट, he take over as the officiating president till a fresh election is held. As officiating president, he exercise all the power, privilege, etc. of the president of India. भाई अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है, वैकेंट होता है डेथ के कारण, रेजिग्नेशन के कारण या इम्पीचमेंट के कारण, तो उस समय जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उनकी जगह पे वर्क करते हैं. ठीक है, जब तक इलेक्शन नहीं होता है और 6 मंथ के अंदर में इलेक्शन कराना होता है. Answer the following question. How is the Union Council of Ministers appointed? Explain its main functions. तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट और उनका मुख्य कार्य क्या है. द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट. द composition of the council of ministers start with the appointment of the prime minister by the president of India. Other ministers are appointed afterwards by the president on the advice of the prime minister. And the main function of the council of ministers are: it frame internal and external policy of the country. It take decision at the national and international level. It run administration through various ministers like defense, finance, agriculture, foreign affairs, health, etc. The council also of a minister performs certain legislative functions. Question number 2. List any 5 power and function of the Prime Minister of India. The Prime Minister of India is the pivot and entire administration revolve around him, her. She is the head of government and perform the following functions. Form Council of Ministers, preside over the meeting of the cabinet as well as Council of Ministers, coordinate the working of various departments, and advise the President to summon or prorogue the session or to dissolve the Lok Sabha before its term expire. Advise
important appointments like that of chairman of UPSC, Auditor General of India, ambassador, etc. act as a link between the president and the cabinet. Question number 3. Describe the legislative and financial power of the President of India. That first, legislative power. She can summon, prorogue, and address the two houses of the Parliament. Every year, the first session of the Parliament beginning with her address. The President can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal term. If she is advised to do so बाय द प्राइम मिनिस्टर, अगर भाई प्राइम मिनिस्टर उसको प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि आप लोकसभा भंग की जाए, तो उनकी एडवाइस पे लोकसभा को भंग करते हैं. नो बिल बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिकम अ लॉ विदाउट हिज हर कंसर्न. अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इन एसेंशियल बिफोर द मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा. फाइनेंशियल पावर. The annual budget of the country is presented in the parliament in the name of the president. All money bills also require her approval before introducing them in the Lok Sabha. She has the power to appoint member of the finance commission. In case certain extraordinary situation arise, the president can sanction money to the government out of contingency fund to meet the situation. Explain the three situations under which the President of India can proclaim emergency. कौन सी 3 कंडीशन आती हैं जिसके कारण प्रेसिडेंट जो हैं वो इमरजेंसी लागू कर सकते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इमरजेंसी इन द फॉलोइंग सिचुएशन. इफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज threatened by war or external aggressions or internal armed rebellions, the president can declare a state emergency for the whole country. कब कर सकते हैं? तो जब कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है या इंटरनल आर्म रिबिलियंस हो रहा है, मैंने मान लो कोई वार हुआ या अंदरूनी देश में अंदरूनी कोई क्या कहते हैं उसको, मैंने दंगा उंगा हो रहा है, उसके कारण सिचुएशन ख़राब हो रहा है, तो उसमें वो इमरजेंसी लगा सकते हैं. If the government of a state is not begin run in according with the constitution, the president can declare emergency in that state. It is also called impositions of the president rule in a state. When the financial stability of the country is threatened, the president can declare a state of financial emergency. Now explain the following terms: coalition government, impeachment, collective responsibilities, parliamentary form of government, electoral college. Now, coalition government. It is a government formed by an alliance of the 2 or more political parties, usually when no single party get a clear majority in a legislature. जब लेजिस्लेचर में क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही है तो किस तरह का गवर्नमेंट फॉर्म होती है? तो कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है, यानी मल्टी पार्टीज गवर्नमेंट. Impeachment. The process to remove the President of India is called impeachment. If a president violated the constitution, she can be removed from office by resolution of impeachment, which is passed by both the House of Parliament by 2/3 majority of the total membership. And collective responsibility. This means that all the ministers together are answerable to the Parliament for any decision that taken by cabinet. All of them swim and sink together. Parliamentary form of government. The form of government which is answerable to the Parliament or the Union legislature. Now last, electoral college. It consists of elected member of the Lok Sabha, Rajya Sbaha, the legislative assembly of the state. Thanks for watching. और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए.